fact, our reporter SIDHARTH Pandey, our camera person who's also on the ground there, have been injured, as well as several other journalists who were lathi-charged when the police turned their anger on them. These are crew members. Our reporter SIDHARTH there being treated for an injured arm after the police lathi-charged our reporters. The whole NDTV crew there has been injured. Their cameras have been snatched away as well, and questions are being raised about why the police, who allowed the media to be present there to take shots of what was happening, why they turned their anger upon the media. The NDTV crew are in fact injured. My colleague SIDHARTH Pandey there injured when he was trying to help another journalist who was being beaten by the police. So the situation seems to be out of control on the ground, with the anger of the police not just towards the supporters who have been creating the cordon, but now turning that anger towards journalists as well. You can see that NDTV crew members there who are limping, other journalists also suffering the same fate. That's the NDTV camera person there. Clearly, he's been injured on the leg. He's being, they're all being given first aid on the spot there. In fact, one of our camera persons has been injured so badly he had to be taken to the dispensary. Cameras there which have also been damaged. Some of the cameras which have been snatched by the police. You can see that the police hit them both on the hands, the legs, on the arm, all over the body to try and drive them off, threatened them. Let's take listen. मीडिया को अंदर एंट्री दी, उसके बाद फिर टारगेट किया गया, क्या था वो हुआ क्या था अंदर, आप हमें बताइए। जहाँ हमें बताया गया था हम वहाँ खड़े थे, उससे ज्यादा आगे गए नहीं। उन्होंने नहीं बताया था हमें कि आप यहीं खड़े नहीं। उसके बाद कवर करते करते उन्होंने कहीं से शुरुआत की, किसी दूसरे मीडिया वाले को मार दिया, और उसके बाद हमें हमारे तरफ दौड़ गए। फिर भी हमने अपना कैमरा डाउन किया, बोले शूट नहीं करने जा रहे हैं, आगे पकड़ लिया, कैमरा डैमेज भी हुआ है और एक फीज भी किया गया, और लेकिन पता नहीं है वो कैमरा कहाँ है। बहुत सब नेटवर्क के साथ हुआ है, सब साइंसलों के साथ हुआ है, तो मीडिया को पहले टारगेट किया गया। अब ये पता नहीं भैया, आप मुझसे ऐसा सवाल मत पूछो। So what you have there is people talking about what happened to them, journalists saying that they were following the rules which were given by the police themselves, trying to do exactly what they were told and try and report as faithfully as possible on the situation, and talking about how the lathi charge on them began. NDTV camera person and reporter on the ground there. Let's listen in. जहाँ तक उन्होंने कहा था वहाँ तक हम अंदर गए, और हम लोग क्वाइट बहुत दूर थे वहाँ से, मतलब जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा था उससे काफी दूर से हम लोग शूट कर रहे थे, बट अचानक पीछे से सम ऑफिसर्स आए और उन्होंने बस मारना चालू कर दिया, कैमरा तोड़ो, उनका छीनो, एंड दे स्टिल सेड कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ आपको चोट लगी? हाथों में बहुत मारा है, पैरों में बहुत मारा है। स्पेशली मीडिया वालों को टारगेट किया उन्होंने, और सारा कैमरा छीन लिया, और फिर पीछे से इतनी लाठियाँ मार रहे थे कि मतलब यू कांट रिकॉग्नाइज कौन कौन मार रहा है। क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि पहले जैसे हमारे पास सूचना आई थी कि पहले मीडिया को अंदर बुलाया गया और उसके बाद फिर मीडिया को टारगेट किया, क्या इसके पीछे कुछ नजर आता है, या ओवरऑल आप कैसे देखते, क्या कहें? देखिए, हम लोगों ने सुबह, जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो हरियाणा के डीजीपी उनसे बात की कि यहाँ पर जो मीडिया है उसको अंदर अलाउ कीजिए, और हरियाणा के डीजीपी ने वहाँ के जो एसपी हैं वहाँ पर जो तैनात थे उनको फोन करके ये कहा कि मीडिया को अंदर अलाउ कीजिए और इनके साथ जो पुलिस बल है वो रहेगा। लेकिन जैसे ही मीडिया वाले अंदर पहुंचे और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, हालांकि हम लोग बहुत दूर खड़े हुए थे, उसके बाद भी पुलिस ने सबसे पहले हमें टारगेट किया। हमारे जो सहयोगी हैं बहुत सारे, वो सभी इंजर्ड हुए हैं। बहुत सारे जो प्रिंट के पत्रकार हैं या टेलीविजन के पत्रकार हैं, मोस्टली सारे पत्रकार जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बहुत लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा जो कैमरे हमारे हैं वो तोड़ दिए गए हैं, बहुत सारे कैमरे छीन लिए गए हैं। तो पुलिस का रवैया मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने क्यों किया ये, क्योंकि पहले तो वो खुद ले गए थे और अचानक उनको ऐसा क्या हुआ, किसके सारे पर हुआ, ये सोचने वाली बात है कि आखिर किसके सारे पर उन्होंने मीडिया को टारगेट किया। अधिकतर मीडिया वाले ज्यादा टारगेट किए गए। बिल्कुल, जितने वहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी थे सबको टारगेट किया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया वहाँ पर। और मैंने खुद देखा कि काफी सारे जो मीडिया कर्मी थे उनके सिर पर लाठियां मारी गई, उनके खून निकल रहा था, और बहुत सारे लोगों के फ्रैक्चर भी हो गए हैं, उनके पैरों में चोट आई, हाथों में चोट आई है। आखिर मीडिया पर पुलिस ने किस बात तक गुस्सा निकाला है, वजह क्या है? The question which is being asked there is why the police turned their attention to those of the media while an ongoing battle seemed to be raging on the grounds of the ashram to try and enter it.
why were people of the media targeted at a point where they were just reporting what was happening on the ground? Now, of course, NDTV, they're talking about our own camera people, our own reporters on the ground who have been injured by the police lathi charge, and reiterating, NDTV's SIDHARTH Pandey continued to report from the ground after being injured, talking about how they were following the guidelines which had been laid down by the police. They had kept a certain distance from the compound where they were trying to storm the ashram. They were just doing what they were told, which was when it seemed that an order was given to turn the police attention to the media as well, which seems to be the big question that people in the media have there. Why were they beaten? Why were their cameras snatched? Why were their cameras broken? And it seems at the moment the authorities don't have an answer for that. According to the latest we have coming in from the government in Haryana, is that they are monitoring the situation, but they are, and I quote, "the verifying reports of attack on the media," which of course, as we can see on our screen, seems to be something which very clearly happened. We've got images there which came in of the media being threatened by police in full riot control gear. We've got our journalists there reporting about how they were lathi charged by the police, and of course the Haryana government, which has already come under a lot of criticism for the way that they have handled the situation at the ashram over the last 11 days or so, are now going to be facing more questions on this issue as well.